Hello friends, welcome to my channel Learns Loud. Today we are going to discuss about neonatal resuscitation. It is an emergency procedure which we done during emergency condition on babies. So let's see step by step what is neonatal resuscitation procedure. First, introduction. Resuscitation of the newborn is a real emergency requiring participation of everyone in the labor or delivery room. Often, a good antenatal checkup indicates whether resuscitation is likely to be needed. A weak fetal heart, less than 100 beat, its irregularity during the late stage of labor, it is a sign of progressive asphyxia that will need resuscitative measures. Then see the definition. Neonatal resuscitation, it is a set of intervention in which we use to assist the airway, breathing and circulation of newborn following birth. Another definition, neonatal resuscitation, it is a series of action which is used to assist newborn babies who have difficulty with making physiological transition from the intrauterine to extrauterine life. Now let's see what are the purpose to conduct resuscitation procedure. First, to initiate normal breathing of baby. Second, to maintain adequate tissue perfusion. Third, to restore normal core temperature. And fourth, maintain adequate cardiac output. Next, we see what are the indications. First, preterm delivery. Next, delivery other than normal. If baby having malpresentation, multiple pregnancy, fetal distress, meconium staining, severe intrauterine growth retardation, antepartum hemorrhage, or antenatal diagnosis of any fetal abnormalities. So these are the indications for resuscitation procedure. Now, the preparation for resuscitation tray should be managed for emergency condition as early as possible. ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. फर्स्ट, कि हमारे पास रेडिएंट हीट सोर्स हो एंड जितने भी रिसक्सिटेशन इक्विपमेंट्स होते हैं वो इमीडिएटली अवेलेबल होना चाहिए एंड ऑल आर इन अ वर्किंग ऑर्डर. देन वन स्किल्ड पर्सन needed for neonatal resuscitation. Now let's see what are the equipments we have needed. First, suction equipments. In that include meconium aspirator, mechanical suction, suction catheters, feeding tube, 20 ml of syringe. Next, bag and mask equipment. In this include neonatal resuscitation bag, face mask, oxygen with flow meter and tubing. Next, intubation equipment. In that we have to need laryngoscope, extra bulb and batteries for laryngoscope, endotracheal tubes, stylet and scissor. Then what are the medication? Epinephrine, naloxone hydrochloride, sodium bicarbonate, sterile water. Then rather than things are radiant warmer, stethoscope, adhesive tape, syringe that is for 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml and 50. Then umbilical catheter, 3-way stopcock, gauze and gloves. So these all are articles we have to keep ready in a resuscitation tray. Now what are the sequence of resuscitation? The sequence is TABC. So basically T, that is stand for maintenance of temperature. Second, A, that is stand for establishing an open airway. B, that is stand for initiate breathing due to tactile stimulation or positive breath. When necessary, we using either bag mask or ET tube. Then C, for maintaining circulation. So these are the components, basic components that we used in the resuscitation procedure. So now start the steps of resuscitation. So in the steps of resuscitation procedure, first start from positioning. So first the baby should be lie down in a flat surface and baby neck should be hyperextended.
कि फॉर बेबी के नेक को हाइपर एक्सटेंड करने के लिए हम क्या करते हैं, और शोल्डर रोल और अ रोल्ड ब्लैंकेट which should placed under the shoulder to uplift the neck. Okay, why we give shoulder roll? Because of this may decrease air entry and it help to maintain open airway. Then if the infant has copious secretion from mouth, keep head turned to side. Okay, next फर्स्ट अपने क्या करना है, हमको पोजीशनिंग देना है. पोजीशनिंग के दौरान बेबी लाई डाउन सरफेस में होना चाहिए और नेक हाइपर एक्सटेंडेड होना चाहिए. ठीक है, और शोल्डर रोल को हमको क्या करना है, अंडर द शोल्डर प्लेस करना है. दैट्स इट. द नेक्स्ट स्टेप इज सक्शनिंग. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सक्शनिंग फर्स्ट हमको सक्शन करना है माउथ में, देन हमको सक्शन करना है नोज में. ठीक है, वाइल डूइंग सक्शनिंग द size of the catheter is 12 to 14 French gauge and the suction pressure should be kept around 80 mmHg. It should not exceed 100 mmHg. Now, next step is dry, stimulate and reposition. After suctioning, the baby should be dry adequately and using always pre-warmed linen. Then provide physical stimulation that is necessary for initiation of respiration. After doing all of this, then we have to give free flow of oxygen. Okay, that is 5 to 6 liter per minute. Now see one algorithm, that is neonatal resuscitation guidelines that we have to follow during any resuscitation steps. So in that आपको यहाँ दिख रहा होगा, फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे बर्थ. ठीक है, तो बर्थ में हम क्या देखते हैं, ये 4 चीजें हमको सबसे पहले देखना होता है. ठीक है, टर्म गेस्टेशन है कि नहीं बेबी, क्लियर एमनियोटिक फ्लूइड है या नहीं, ब्रीदिंग है कि नहीं, बेबी प्रॉपर क्राई कर रहा है या नहीं, या गुड मसल टोन. ठीक है, अगर ये चारों चीजें ओके हैं, यस है, देन हम क्या करते हैं, बेबी को रूटीन केयर के लिए या प्रोवाइड वार्मथ या क्लियर एयरवे और बेबी को ड्राई करते हैं. नॉर्मल जो हम केयर करते हैं बच्चे का आफ्टर बर्थ में, वो सारे प्रोसेस हम फॉलो करते हैं. बट इनमें से अगर कोई भी चीज प्रॉपर नहीं है ना, बेबी का टर्म गेस्टेशन नहीं है या एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर नहीं है, बेबी प्रॉपर क्राई नहीं कर रहा है या मसल टोन प्रॉपर नहीं है, तो उस कंडीशन में हम नेक्स्ट चीज को फॉलो करते हैं. क्या चीज, जो हमने अभी पढ़ा. सबसे पहले हमको क्या करना है, वार्मथ प्रोवाइड करना है, पोजीशन देना है, उसका एयरवेज क्लियर करना, सक्शनिंग करनी है, देन फिर हम उसको ड्राई, स्टिमुलेट और रिपोजिशन करेंगे. ठीक है, ये चारों स्टेप्स करने के बाद, और ये चारों जो स्टेप है ये हमको विद इन 30 सेकेंड्स में कंप्लीट करना है. ये 4 स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद हमको इवेल्युएट करना है कि बेबी का रेस्पिरेशन, हार्ट रेट एंड कलर ये तीनों प्रॉपर है या नहीं. इफ ब्रीदिंग, हार्ट रेट इंक्रीज 100 एंड बेबी का स्किन जो टोन है अगर वो पिंक दिख रहा है, दैट मीन्स बेबी को हम क्या कर सकते हैं, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन पे रख के उसको ऑब्जर्वेशनल केयर पे हम रखेंगे. बट इतना केयर करने के बावजूद भी अगर बेबी का जो हार्ट रेट है दैट इज बिलो 100, तब हम क्या करेंगे, बेबी को पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, इफ वेंटिलेशन देने के बाद अगर बेबी का हार्ट रेट जो है वो 100 अबव जा रहा है, बेबी का स्किन टोन जो है वो इम्प्रूव हो रहा है, तो बेबी को हम पोस्ट रिसक्सिटेशन केयर प्रोवाइड करते हैं. बट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के बाद भी अगर हार्ट रेट बिलो है 60 के, देन वी हैव टू गिव ventilation plus chest compressions. Then इसके बाद भी आफ्टर चेस्ट कंप्रेशन एंड पॉजिटिव एयर प्रेशर वेंटिलेशन के बाद भी अगर हार्ट रेट जो है वो बिलो 60 ही जा रहा है, तब हम क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे ड्रग्स दैट इज एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन. ठीक है, सो ये एक कॉमन प्रोसेस है जो हमको स्टेप बाय स्टेप क्या होता है फॉलो करना पड़ता है ड्यूरिंग द रिसर्च प्रोसीजर और उसके अकॉर्डिंग बेबी का इवैल्यूएशन. ओके, बेड मास्क वेंटिलेशन जब हम परफॉर्म कर रहे हैं इसमें क्या रहता है, मेनली 30 to 60 ब्रेथ पर मिनट हमको क्या है बेबी को देना है. ठीक है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाइल गिव वेंटिलेशन प्रोसेस, चेक करना है कि बेबी का जो चेस्ट है वो राइज हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है, अगर राइज नहीं हो रहा है दैट मीन्स 3 चीज में मिस्टेक हो सकता है. फर्स्ट, या तो बैग और मास्क का प्रॉपर कनेक्शन नहीं है,
या तो जो हम मास्क यूज़ कर रहे हैं बेबी के लिए वो प्रॉपर नहीं है, या बेबी का जो हेड है, जो नेक जो हाइपर एक्सटेंशन होना चाहिए वो प्रॉपरली नहीं है। ठीक है, तो जब हम बेड मास्क वेंटिलेशन दे रहे हैं तो इन चीज़ों को हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चेस्ट राइज होना चाहिए। इफ चेस्ट राइज नहीं हो रहा है दैट मीन्स हमको चेक करना है बेड मास्क प्रॉपर कनेक्ट है या नहीं, मास्क प्रॉपर है या नहीं, देन फिर वापस हम वेंटिलेशन स्टार्ट करेंगे। सो हियर हाउ टू वेंटिलेट, यहाँ प्रोसेस दिया हुआ है कि सबसे पहले नेक आपको क्या रखना है, स्लाइटली एक्सटेंडेड रखना है। देन फेस मास्क अप्रोप्रिएट बेबी के साइज का आपको प्लेस करना है, वो पूरा कवर, नोज और माउथ इसमें पूरा कवर होना चाहिए। ठीक है, देन हम क्या करते हैं, वेंटिलेट करना स्टार्ट करेंगे और 40 टाइम्स हमको पर मिनट क्या करना है, स्क्वीज करना है। देन इफ हार्ट रेट अबव 100 जा रहा है तो हम वेंटिलेशन का प्रोसेस को हम क्या करते हैं, डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। मॉनिटर करना है बेबी के हार्ट रेट, रेस्पिरेशन एंड स्किन कलर को। बट अगर 60 to 100 के बीच रह रहा है, मतलब फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो हमको वेंटिलेशन कंटिन्यू रखना है। अगर बेबी का हार्ट रेट राइज हो रहा है तो हमको चेस्ट कंप्रेशन बंद करना है, सिर्फ बेबी को वेंटिलेट पे रखना है। बट अगर बिलो ही जा रहे हैं तो हमको वेंटिलेशन और चेस्ट कंप्रेशन कंटिन्यू रखना है। Then chest compression. Chest compression means what? It is a consistent rhythmic compression of the sternum. ठीक है, and that compress the heart against the spine, that increase intrathoracic pressure and circulate the blood to the vital organs of the body. Okay, so in that procedure, if 30 seconds of positive pressure ventilation, अगर एम्बो बैग के थ्रू वेंटिलेशन दे रहे हैं, उसके 30 सेकेंड्स के बाद भी अगर बेबी का जो हार्ट रेट है वो बिलो ही है 60, देन हमको चेस्ट कंप्रेशन पे जाते हैं। ठीक है, सो चेस्ट कंप्रेशन जो हम दे रहे हैं दैट इज 2 टेक्निक्स वी हैव यूज, दैट इज थंब टेक्निक एंड 2 फिंगर टेक्निक। So here this is the procedure is shown in the picture. First picture that show 2 finger technique, second picture that show 2 thumb and circling technique. Okay, and last third picture is 2 thumb 90-degree technique. So these are the techniques we have follow while during resuscitation. Okay, so what are the ratio in between? So in 1 minute 90 chest compression and 30 breath are administered. Okay, so the proper ratio is in 1 minute that is 3:1. Okay, 90 compression and 30 ventilation in 1 minute. Okay, और जो चेस्ट हम कंप्रेस कर रहे हैं दैट मीन्स वो आपको कितना होना चाहिए, 1.5 सेकेंड में आपका 3 टाइम्स कंप्रेस होना चाहिए। ओके, यू मस्ट कंप्रेस द चेस्ट 3 टाइम्स इन 1.5 सेकेंड। ओके, देन आफ्टर 30 सेकेंड ऑफ चेस्ट कंप्रेशन आपको हार्ट रेट चेक करना है। अगर फिर भी आपका जो है हार्ट रेट दैट इज बिलो 60, देन कंटिन्यू चेस्ट कंप्रेशन। ठीक है, अंटिल इफ द हार्ट रेट बियॉन्ड 60। देन हियर देयर आर सम ड्रग्स, इफ आप वेंटिलेशन के बाद भी या फिर चेस्ट कंप्रेशन के बाद भी अगर बेबी का जो हार्ट रेट है वो राइज नहीं हो रहा है, इन दैट कंडीशन वी हैव गिव सम मेडिकेशन। ओके, so here there are some medication. First epinephrine, volume expander, sodium bicarbonate and naloxone. Okay, these are the some drugs. इसमें से मोस्टली जो हम ड्रग ऑफ चॉइस जो हम देते हैं दैट इज एपिनेफ्रिन। So at last, what are the nursing care after resuscitation procedure? So first re-evaluate all the vital signs, then check for further any danger sign. Okay, and record the results, monitoring sheet, ensure routine care, begin breastfeeding as soon as possible, keep under observation for 24 hours, every 2 hours check for any danger sign, and if any danger present keep the mother and unit together wherever possible. Okay, so this is all about neonatal resuscitation procedure. So I hope आपको ये वीडियो के थ्रू रिसेक्शन प्रोसीजर जो है वो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, या नर्सिंग टॉपिक्स के रिगार्डिंग अगर आपको और किसी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उन सभी टॉपिक्स पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो आपको हेल्पफुल रहा होगा। सो प्लीज़
सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन स्टे हेल्दी, टेक केयर।